Good evening. You're watching To The Point. I'm Akshita Nandagopal, and let's begin with big breaking news that's coming in on the Maharashtra political crisis. The BJP is no longer watching from the sidelines. The BJP is saying that they consider Eknath Shinde's camp as the real Shiv Sena. And if they come up with a proposal, the Bharatiya Janata Party is ready to consider it, meaning that they're ready to consider an alliance with Eknath Shinde, with the Shinde Sena, who they've now officially recognized as the real Shiv Sena. अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गट की ओर से की गई है। हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गटों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। So the BJP, which has been in a wait and watch mode till now, is slowly creeping into the front lines, seeing how things are unraveling, one setback after another to Uddhav Thackeray, and things moving in favor of Shinde Sena. They believe now is the right time to speak out. The BJP saying we recognize Shinde Sena as the real Shiv Sena because of their numbers, and if they approach us, we will consider deciding on an alliance as well. So it looks like the decks are cleared now for what was anticipated from day one, that there would be a tie-up between Shinde Sena and the BJP. Let's take this across to Vidya. She's joining us live with more details on this. A party that's been mum, essentially watching from the sidelines all along, Vidya. The BJP is now speaking out, knowing that things are moving in favor of Shinde Sena perhaps. They've come out to say that Shinde Sena is the real Sena. We'll consider, if they approach us, going ahead with an alliance. Don't think we have Vidya with us. We'll reconnect with her. We have a bit of a problem there with her audio. We're going to take this across to all of our reporters spread across Mumbai, getting us all the latest on this story. All right, let's open this up also to the panelists who are joining us this evening. Vaibhav Agarwal, political analyst, leans towards the BJP, is joining us on this broadcast. We also have Shiv Sena spokesperson Sanjana Ghadi with us. Sanjana, I'd like to begin with you. Is now the Shiv Sena, or rather the Uddhav Sena, accepting and conceding that you don't have the numbers, it's all but over for Uddhav Thackeray? जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, जब तक फ्लोर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes. जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तब तक हम ये मानेंगे नहीं। हम जानते हैं कि जो 20 से 21 एमएलए हमारे कांटेक्ट में है, वो ये महाराष्ट्र में आए, फ्लोर टेस्ट दे और सामने बताए कि क्या हो रहा है। तब तक हम लोग नहीं मानेंगे और इसलिए शायद उद्धव साहब ने इस्तीफा भी रोक के रखा हुआ है। हम लोग लास्ट मोमेंट तक अभी वेट करना चाहेंगे, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता। पर सच ये है संजना कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ था आज या कल भी होगा, प्रॉब्लम ये है कि उद्धव ठाकरे के पास शायद 16 या 17 एमएलए है और जितने भी एमएलए हैं उनके मिनिस्टर्स भी एकनाथ शिंदे के पास है। यस, वी नो ऑल दिस थिंग्स, हम जानते हैं डे वन से। आपको मालूम है जिस दिन ये हुआ उसी दिन माननीय उद्धव साहब ने वर्षा बंगला छोड़ा है। इसका मतलब हमने ऐसे भी सीएम्स देखे हैं कि जो पार्टी उस पद से निकलने के बाद वहां से निकलते नहीं, लेकिन ये पहले दिन ही वर्षा बंगलों से निकले हैं। अपना इस्तीफा भी शायद उन्होंने उसी दिन अपने लिए रेडी रखा था, लेकिन जब महाराष्ट्र के इस विद्रोह का असली स्वरूप उन्होंने जाना, जैसे आपने अभी बताया कि बीजेपी अब आगे आ रही है, लेकिन ये पूरा करने वाला खिलाड़ी पूरा बीजेपी है और वो बीजेपी किस तरह से मूव कर रही थी, ये जानने के बाद महाराष्ट्र के साथ किस तरह से इन्होंने व्यवहार किया है, उसका कहीं पे निषेध करने के लिए उद्धव साहब रुके हुए हैं। we can't deny, you're right, we can't deny the BJP's role, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि इतना गुस्सा था शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ। There are so many MLAs today who've joined Eknath Shinde. Yes, maybe the BJP has a role, but there's also a clear factor here of anger against Uddhav Thackeray. Not because of गुस्सा, अगर वो होता तो इससे पहले निकलता। सिर्फ एक सिंपल बात है, एकनाथ शिंदे जी का महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होना और उसके साथ ही ईडी का दबाव,
ईडी सीबीआई जो यंत्रणा पूरी तरह से, जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, राज्य नहीं है, वहां पे जिस तरह से एक्टिव है, उसका ये परिणाम है। ये हम लोग पूरे, आज देखिए आप, आज संजय राउत जी को भी समन्स आ गए। मतलब किस तरह से दमन किया जा रहा है लोकशाही का, वो समझने की कोशिश कीजिए। लोकशाही तंत्र है भारत में, विरोधी पक्ष का उतना ही महत्व है, लेकिन बीजेपी सरकार पूरे भारत में कहीं भी विरोधी पक्ष रखना नहीं चाहती है। भारत की जनता वक्त पे पहचाने ये किस तरह की हिटलरशाही को हम लोग आगे सामना करने वाले हैं। Vaibhav Agarwal, good evening. Join us on this broadcast as well. Sanjana is saying, the Shiv Sena is saying that, the ED has issued a summons to Sanjay Rao. That's clear proof that there was pressure on all of these MLAs. That's why they've gone ahead and taken the step. That all of this is being orchestrated by the BJP. Now you have the BJP speaking out finally, saying that, look, Shinde Sena is the real Shiv Sena. See, Akshita, I think Sanjana ji has her own point and she has to work around the framework of her party's line. But you have to appreciate that it was 3-4 days ago when the sitting chief minister was not asked by the governor to submit a resignation, was not under anything, under any pressure or anything, simply got up, vacated his official house. I mean, what does that indicate? He lost his own battle. And as far as BJP is concerned, as an onlooker on the entire thing, the way I see it is a very simple thing, that any political party is supposed to have the concept of Rajya Dharma, the Raj Dharma. And there is a political space that is being vacated as we talk. And I don't see any reason why the Bharatiya Janata Party should not combine hands with anyone else to serve the people at large. It's not a circumstance of them making the most of what's happened. The question is whether they're the architects of what's happened, Vaibhav. Okay, so Akshita, India is a land of heroes. It was the Mahabali, and then the latest was Shaktiman. I mean, let's stop treating BJP and its leaders as the Shaktiman. I think anyone who sees it is only fearing the politics of people that BJP has brought into the entire landscape of politics in today's times. In past 10 years, it's completely changed it. And as a onlooker on the entire thing, as a right-wing liberal, I'm completely not surprised that BJP is only willing to extend a helping hand to the people and the welfare of the people by joining hands with anyone who's available, in line of the ideology that they have. And Bharatiya Janata Party has an ideology to serve people. And so does Shinde camp, and as far as I've seen in the news items, I have a couple of friends there, but I don't think that the architect of the entire story is the Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party has nothing to do with it, as far as I see it. It is just there's a political gap that is being left as an ideal situation, and in an ideal situation, BJP is just taking over. As simple as that. Sanjana, are we giving more credit to the BJP than they deserve in this entire political crisis? You're conveniently saying the BJP is to blame, but the reality is, and many have also opined this, कि ये शायद ये जो rebellion है, this was a long time coming against Uddhav Thackeray. The fact is that Eknath Shinde and every MLA, जो भी विधायक है Eknath Shinde के साथ, सब यही बोल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो कहाँ है अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हो। सबसे पहले तो अभी उन्होंने बीजेपी के लिए एक वर्ड यूज किया, शक्तिमान। आई विल जस्ट से, बीजेपी का जब नाम आता है एक ही गाना याद आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, उसके सिवा और कुछ याद नहीं आता है। हर मंत्री, हर यहाँ मैंने जैसे बताया, यहाँ पे संजय राठौड़ जी रहे, उनके ऊपर एक महिला की केस का ये रखा हुआ है, हमारी यामिनी यादव जी रहे, प्रताप सरनाइक जी रहे, हर एक के पास ईडी की नोटिस, उनकी जांच चल रही थी। और ऐसे लोगों को लेके, और साथ में एकनाथ शिंदे जी की एम्बिशन, मतलब ये कहीं पे पनपी थी, 2.5 साल पहले ही उनको मुख्यमंत्री होना था। ये कहीं पे हम पार्टी वर्कर्स ने भी जाना था, क्योंकि यही बंदा था जो 2019 में बीजेपी के साथ नहीं रहना है बोल के कल्याण की सभा में रिजाइन देता है उद्धव साहब के हाथ में। क्या तभी भाजपा हिंदुत्ववादी नहीं थी? और आज 2.5 साल नगर विकास मंत्री जैसे बड़े बड़े पद भुगतने के बाद उन्हें याद आ रहा है हिंदुत्व की। ओके, वैभव, अभी इसमें से कितने मंत्री है जो कांग्रेस? संजना जी, मैं आए
सिंपल पॉइंट, संजना जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि सेना ने पिछले कई सालों में प्रमोद महाजन जी के बाला साहब के रहते हुए प्रमोद महाजन जी के साथ एक टाई अप किया, जिसके अंदर एक आइडियोलॉजी मिली, एक तरीका मिला काम करने का, एक साथ मिलकर जनता की सेवा करने का तरीका मिला। और जब से सरकार बनी है, कांग्रेस और एनसीपी की आइडियोलॉजी तो कभी भी नहीं थी। नहीं तो अलायंस करने का तो आप देखें बहुत सारे मौके थे पहले भी। तो अगर आइडियोलॉजी चेंज हो गई तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडियोलॉजी के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनको अपना ग्राउंड बचाना पड़ेगा, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो इलेक्शन जीत के आए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको उसी समय अब 5 साल खत्म हुए, 2.5 साल के बाद I'm going to interrupt you. Sanjana, मैं अभी आती हूँ आपके पास. We just want to play out what Mr. Chhagan Bhujbal is currently saying of the NCP, speaking live. त्यांच्याबरोबर संपर्क साधेल, एकत्र बोलवेल, मीटिंग करेल. त्यासाठी जे आहे कुणाची तरी नियुक्ती करावीच लागते ना. त्याप्रमाणे त्यांनी ती केलेली आहे. राज्यसभा विधान परिषदेची निवडणूक झाली, त्यामध्ये पराभव झालेला आहे. पराभव झाल्यामुळे कुठेतरी अशा पद्धतीने ही गोष्ट घडली का? कारण की दोघांनी बोलल्यामुळे मला काही कळलं. महाविकास आघाडीकडे मतं असताना सुद्धा राज्यसभा आणि विधान परिषदेला महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला, त्यामुळे या गोष्टी घडताना दिसत आहेत का? कारण की मला त्याचा काही संबंध नाही. ह्याच्यामध्ये अपक्ष आहेत, लहान लहान पक्ष आहेत, इतर काही गोष्टी असतात. त्याच्यामुळे अनेक वेळेला एखाद्या पक्षाचा उमेदवार. Okay, so that is Chhagan Bhujbal. Many refer to him as the original rebel of the Sena. He is now praising Uddhav Thackeray. He's with the NCP, so of course he's going to try and back Uddhav Sena as much as possible. Curious how Indian politics really takes those twists and turns. But let's get back to the debate at hand. Who's to blame for this political crisis? What's led to this situation where Uddhav Thackeray could be now dethroned as the chief minister? Vaibhav, you were making a point. Go ahead. So, मैं बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ अक्षिता कि जो एक एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लड़के आए हैं, मैं भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं भी राजनीतिक उठक पटक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं, जनता के बीच रहता हूं. उसको अपनी सेकंड टर्म के लिए भी तो जाना है. ये कोई एक बार की गिफ्ट तो नहीं है ना कि एक बार गिफ्ट मिल गई बस अब ठीक है अब अगली बार किसी और को देंगे. उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया है, उसी जनता के पास दोबारा जाके वोट लेनी है. तो अगर जिस पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे पहले वोट ली थी, दूसरी बार भी तो लेनी है. उनकी जनता के लिए काम भी तो करना है. और जो अगर रिबेल एमएलए है, मैं अगर दूर बैठ के इस चीज को स्टडी करूं तो इन सबके बीच में रिबेल करने वाली कोई बात नहीं है. ये सबके बीच में केवल इतनी सी बात है कि भाई साहब हमारी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से नहीं मिल रही है, आपकी आइडियोलॉजी पता नहीं कहां चली गई है, आपके अलायंस पार्टनर पता नहीं कहां चले गए हैं. अब हम अगली बार जाके कैसे वोट लेंगे इसलिए हम अलग हो रहे हैं. बात सिंपल है. ओके वन क्विक आंसर. संजना, रेस्पॉन्ड टू दैट. कौन सा कॉमन ग्राउंड है इस अलायंस के लिए जब ये रेबल्स, एकनाथ शिंदे एंड ऑल द अदर रेबल्स से दैट देयर इज absolutely nothing about the Hindutva ideology that matches with the NCP and Congress? They have a point. There's no recognition of Hindutva ideology by the NCP or Congress. हिंदुत्व गया कहाँ पे है? मैं आपको पूछ रही कहाँ पे गया, कहाँ पे खो गया मुद्दा? हिंदुत्व के साथ तो शिवसेना चल रही है. क्या हुआ सेक्युलर पार्टी के साथ उनकी विचारधारा के साथ वो है. संजना, अगर ये तीन पार्टी बीजेपी हम लोग चले साथ में, हम लोग लोगों की सेवा के लिए लगे हैं. कोविड का चीज था, अभी कितनी सारी पूर्व परिस्थितियां यहाँ पे आई है. नहीं, those are all issues. But then संजना, आप क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो हम डेवलपमेंट के बीच में ये अलायंस फॉर्म किया. हिंदुत्व वी डोंट केयर अबाउट. मैं वही बताना चाहती हूँ कि भाजपा का हिंदुत्व का मुद्दा क्या है? उज्ज्वला योजना फंस गई, किसानों के मुद्दे बाजू में रह गए, महंगाई बढ़ गई है, अग्निपथ जैसे ढकोसला वाली योजनाएं लेके आ रहे, युवा को डिजाइन कर रहे, काम नहीं दे रहे, और कहीं पे सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा. क्या दंगल करना हिंदुत्व का मुद्दा है? सभी को लेके साथ में चल रहे हैं. आज भी आप देखें पंढरपुर में एक दिंडी का वीडियो आया है जिसमें हमारा महाराष्ट्रियन वारकरी और साथ में एक मुस्लिम भाई वहां पे दिंडी कर रहे हैं. क्या गलत है? नहीं गलत है उसमें? संजना we're digressing. Vaibhav, 1 second. Sanjana, हाँ या ना? Is the Shiv Sena, is your party then saying that we don't care about Hindutva? Development is what we care about. Which is a good thing if you say that. श्वास है, हम हिंदुत्व को साथ लेके ही चल रहे हैं और हमेशा हिंदुत्व को साथ लेके ही चल रहे हैं. शिवसेना और हिंदुत्व ये एक ही जुड़े हुए चीज है. एकनाथ शिंदे जैसे लोग रहे, भाजपा रहे, ये अलग नहीं होगा. भाजपा इसका ठेकेदार नहीं है, एकनाथ शिंदे इसका ठेकेदार नहीं है. ओके वैभव, 10 seconds exactly. I'm running out of time.
जी, दिक्कत ये है कि ये अपनी गलती को मानना नहीं चाह रहे हैं। जनता के बीच जिस सोच से अपने आप को लेके आए जी, थे, आप एक बार बता दीजिए ना, हिंदुत्व है क्या? नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बता तो दीजिए, कोई हिंदुत्व है क्या? राजनीति में हिंदुत्व कहां से आ गया बीच में? उद्धव ठाकरे को अगर वो बोलते हैं, पूछ रहे हैं ना, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पे अगर उद्धव जी अपना हक जताते हैं, तो बाला साहब ने 10 मात्र बिंदु दिए थे, वो उनमें से 5 बिंदु भी अगर उद्धव जी ने अपने इस पिछले 2.5 साल के सरकार में चलाए हो तो आप गिनवा दीजिए। ये आप बाला साहब के नीतियों पे चल रहे कि नहीं चल रहे, ये हक हमारे I have no more time. I'm sorry, I have no more time. Vaibhav, Sanjana, thank you very much for joining us on this broadcast. You see that things always get heated when it comes to the issue of Hindutva and what the BJP and the Shiv Sena really stand for. But what's very clear right now, the takeaway this evening from all that's played out in the last few hours is that Uddhav Thackeray is facing a lot of problems. He is at the edge of his CM throne, could be thrown off if he doesn't manage to pull off nothing short of a miracle. That's all we have time for this evening. Thank you very much for tuning in. Goodbye. Good night.